Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Madhvi. Good morning, Ramesh. After a very long time, how are you doing? Good morning, Sudev. Good morning, Zaiji. Good morning. एग्जैक्ट कल जो हम वेट कर रहे थे वही वेट पॉइंट आके एलजी को लेके उसके बाद ऊपर गया सो दैट्स रियली नाइस सो जो भी डाउट से पूछ लो विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स अगर M2 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 76 1 आवर का सप्लाई है ये एग्जैक्ट रिजेक्शन टीटीएस 2.0 से ले रहा है ना इंटरमीडिएट रेशियो से वॉल्यूम इंडिकेशन सब एक ही साथ में सो यू कांट गो फॉर एक ही ट्रेड चल रहा है वो अभी भी 34.5 पे एंट्री इंटैक्ट S2B2 सॉरी S2B1 सेटअप डिमांड अलोकेट कर लो सभी 100% ब्रेक होता है तो 150 टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का अलोकेशन होगी ना पहले ऑन द ब्रेक ऑफ 100 वी लुक फॉर द नेक्स्ट एक्सक्यूज मी क्या बात कर रहे हो कीप इट अप गुड जॉब नो डाउट्स गाइस good morning Ambika you're late today right let's start with the analysis what are the two major things that we focused on yesterday वो दो चीज क्या थी जो हमें फोकस में लाना था कल के दिन सो उसके लिए विल कम डाउन टू 1 hour राइट सो पोजीशन अलोकेशन कहाँ पे बिल्ड आउट हुआ था इस पॉइंट ऑफ एक्शन में सुबह में वॉल्यूम इंडिकेशन क्लियर कट बताई थी कि मैं यहाँ से रिवर्स होने वाला हूँ करेक्ट तो उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमारा नीचे में दो एलजी पॉइंट क्रिएट हुई थी LG.1 LG.2 15 मिनट के हिसाब से right so in this proportionate what are the few things that you have to keep in mind and follow right the execution preservation was towards the short क्योंकि एलजी बिना लिए मार्केट रीडेवलपमेंट में नहीं आता जैसे ही एलजी कंप्लीट हुआ व्हाट डू वी नोटिस मार्केट वाज इन स्टैंजेंट जोन ऑफ एक्शन जो कि यहाँ था so next high volume was built at this point
right? So with this high volume build, what did market tend to evaluate? Okay, market has created a stabilized volume. With the stabilized volume, liquidity grab हुई थी. With the wick creation होने के बाद market में rejection preservations दिखाई थी, right? कीपिंग इन माइंड मार्केट यहाँ से ही कंटिन्यूटी में ऊपर के लिए चले जाना चाहिए था, जो कि नहीं गया. वाई? बिकॉज अगर ये वॉल्यूम ही सस्टेनेबल वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम क्या है, राइट? सो यस्टरडे द मार्केट टेंड टू बी इन द फॉर्मेशन. यहाँ पे सेटअप भी नहीं था, राइट? सो इफ यू कम टू 15 मिनट्स एंड चेक, जो फर्स्ट हाई वॉल्यूम रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक्शन में जो थी, यहाँ पे क्या हमारे पास सेटअप थी? नहीं. क्या यहाँ पे हमारे पास सेटअप थी? नहीं, राइट? सो विदाउट सेटअप एग्जीक्यूशंस अगर आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 5 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिलेगा, 5 बार आप ऐसे दोगे, राइट? सो दिस इंडिकेशन वाज इन प्रिजर्वेंस ऑफ जस्ट अ प्रॉपर एसएल फंड ऑफ रिटेलर्स, जो कि इन प्रिजर्वेंस क्या बोलते हैं, जो वॉल्यूम इकट्ठा करना बोलते हैं ना आपके लैंग्वेज में. बिना वॉल्यूम मार्केट में मूवमेंट डेवलप नहीं होता. तो वो वॉल्यूम इंडिकेशन डेवलपमेंट में जब आता है, तब जाके फॉलो थ्रू में अलोकेशंस रिवाइव होती है. जब फॉलो में रिवाइव होती है, तो व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शंस? डेफिनेटली मार्केट अगर ऊपर के लिए भी कंटिन्यू करना है, तो नीचे के लिए आना ही पड़ेगा, सेटअप क्रिएट करना ही पड़ेगा, राइट? सो इन दिस एंटायर मोमेंट अलोकेशन, there is only one thing what market gave you in action plan was post 1 hour high volume, right? So 1 hour high volume कहाँ पे डेवलप हुआ था कल के दिन में, न्यूयॉर्क सेशन में, at this point of action, right? First candle news candle थी, so we will ignore that news candle. Second candle जो allocation में develop हुआ था, 150% से rejection आई थी. इस point of action में market gave a stabilized action plan towards long. क्या हमारे पास उसी point of action में do we have a setup formation? Yes, right? फर्स्ट अलोकेशन पॉइंट थ्री विंग के साथ 4 कैंडल एग्जीक्यूशन विद द इंटैक्ट, जो कि यहाँ पे इंटैक्ट नहीं हुआ था, तो मार्केट केम डाउन, क्रिएटेड अ इंटैक्ट एंड कंटिन्यूड द मूवमेंट, राइट? द सेम मूवमेंट जो हमें चाहिए था कल के दिन में, वो मूवमेंट के साथ ही फॉलो थ्रू में है. उसके साथ आज के दिन में फर्स्ट हाई वॉल्यूम डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, एशियन सेशन का, राइट? So in this pursuance, what are the few major things that you have to keep in mind and follow through allocating the structures, right? Reason of this drop, LG.1, LG.2. दोनों कवर हुए. 200% डिमांड डेवलप हुआ. 200% डिमांड के साथ सेम पॉइंट ऑफ एक्शन से रिजेक्शन, राइट? हाउ डू यू लुक इनटू द प्रिजर्वेंस? ओके, मार्केट अभी फॉलो थ्रू में अलोकेशन डेवलप किया है, तो स्विंग लो स्विंग हाई रिट्रेसमेंट अलॉट करो, फॉर्मुलेट करो. फॉर्मुलेट करने के बाद इंटरमीडिएट रेशियो एग्जैक्टली 4168 के पास आएगा, गोल्डन रेशियो आपका आके 61 के पास आएगा, जो कि दोनों रिजेक्शंस अलॉट हो चुके हैं. सो अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आज का दिन में मार्केट ने गैप अप ओपन किया, राइट? गैप अप ओपन करने के बाद इट कवर्ड द गैप. पोस्ट कवरिंग द गैप, मार्केट टेंड टू कंटिन्यू द डायरेक्शन. अलोकेशन कहां से होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से, करेक्ट? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये होगा हमारा, राइट? बिकॉज लोअर द प्राइस रेंज, लोअर द एक्शन सीक्वेंस दैट इट क्रिएट्स इन द मार्केट. सो यही अलोकेशन के साथ हम यहाँ पे हाई विक रेंज है, तो विक से अलॉट करेंगे. M2 फॉर्मेशन, M2 फॉर्मेशन के साथ डबल 200% टारगेट. 200% टारगेट कंप्लीट करके ब्रेक किया है, knowing that TTS 2.0 is at 66 68. So what we'll do, we'll allot the surplus. सरप्लस अलोकेशन कहाँ से प्लॉट होगा? 150% से रिजेक्शन है, फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट से पूरा ड्रॉप, राइट? सो ये पूरा ड्रॉप जब लोगे, अलोकेशन प्रिजर्वेंस विल गेट इनटू द प्ले ऑफ द रिजेक्शन. आज के दिन का एंट्री जो थी यहाँ,
रीजन, अगर मैं सरप्लस कैंडल का अलोकेशन मूव करता हूँ, एग्जैक्टली मार्केट हैड क्रिएटेड अ विक, टुक द इंटैक्ट, S2B1 का सेटअप 2 क्रिएट किया, सेटअप 2 क्रिएट करके कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट, right? When the continuity in the movement got played, what was the next formation? Minimality M2 create हुआ है, no doubt. M2 के साथ what is the one major thing that you have to keep in mind? 100% break होने के बाद ही allocation 200% का आएगा M2 का, उसके पहले नहीं, right? So in this persona, what are the first few things that you have to keep in mind? Okay, break, sustain. So next target will be 200 surplus. क्या मेरा 200 सरप्लस कल के दिन की M2 जो ग्रुप में भी शेयर हुआ था, राइट, जो अलोकेशन में भी शेयर हुआ था, क्या वही टारगेट के साथ रिजेक्शन ले रहा है? यस, राइट. सो दिस इज हाउ यू लुक फॉर एन अलोकेशन इन प्रिजर्वेंस टू ट्रेड. सो अभी जो स्विंग ट्रेड परसों के दिन से चल रही है, उसका MTSL और कल का एड ऑन का MTSL इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे रिवैम्प हुआ है. सो अगर मेरे को आज के दिन में भी कंटिन्यूटी इन द डायरेक्शन चाहिए, तो पहला मेरे को ये LG चाहिए, राइट. अगर ये LG या ये इंटैक्ट कंप्लीट होते हुए सेटअप मिलेगा, तभी ही मैं एड ऑन देखूंगा, वरना मेरा सिंगल ट्रेड ऑफ एक्शंस विल बी इन द प्ले. ओके, सो दिस इज द स्मॉल फॉर्मेशंस दैट यू हैव टू लुक फॉर. अगर रिट्रेसमेंट फॉर्म हो रहा है, सिंगल कैंडल, टू कैंडल्स, डोंट वरी, इंटैक्ट अलोकेशन के साथ बने रहना, प्रीवियस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का डिमांड अलॉट करना, एंड डायरेक्शन. कोई डाउट है BTC में? प्लीज डू आस्क. सॉरी, कोई डाउट है गोल्ड में? प्लीज डू आस्क. गुड मॉर्निंग आर्यो. गुड मॉर्निंग. You can add on trade for intraday till 4176 1 HID. गुड. सस्टेन होगा तो ही होल्ड करना, वरना नहीं. व्हाट इज MTSL फुल फॉर्म? माइंड सिस्टम ट्रेलिंग. सो जो कि दिमाग में प्लान ऑफ एक्शंस को लेके चलना होता है. एंट्री कहाँ पे हुई है? और
कौन है? But can I ask, he's talking about the volume and Varsha, let him ask. Not an issue. Good morning, Nitesh. How are you? Does the volume changes, the system will interrupt change for what will happen? So, Peter, the allocation will be taken in pursuance of 1 hour, right? Which will be indirective of one allocation point, right? So, what happens is whenever the market is in iceberg zone, right? So, just for an example, this is an iceberg zone. If the volume of the interruption point, right? So market will be in situative of a direction whichever side the market is falling through, right? So in the point of interest where the market has given a high volume break, so in this high volume, the market could reach the nearest rejection point like TTS 2.0, allocations, preservance of supply and demand, minimality or surplus, and from there you could see a rejection till the nearest point of action till the next volume is given a break from the icebergs. Okay, Peter? We don't give tips over here. Positive. No worries, Peter. नीलेश ने आया आते ही अर्जुन का ब्रह्मास्त्र को छोड़ा डायरेक्टली रीडेवलपमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा नाइस डेफिनेटली स्ट्रीम एंड होने से पहले बता दूंगा नीलेश ठीक है डोंट वरी अबाउट इट I was just pulling your leg Nilesh so don't take it in a sarcastic way what checklist should we make for taking a trade जो बुक में है सेम चेकलिस्ट नो चेंजेस
have to go back to work now. I'm on my break. That is why I can listen and thank you. Chat later. Thank you so much, Peter, to taking out the time and clearing out the doubts. Any other doubts, guys? क्या फैजा हर बार निफ्टी में आके फंसो मत यार निफ्टी में हमने तो शॉर्ट मैप किया था ना कहा गया यस परफेक्ट रिजेक्शन allocation first come first serve supply हमेशा फंसते हो अगर उतना दिक्कत है तो ट्रेड ही मत करो इसमें नाउ आई एम हेल्पिंग यू आउट बट इन फ्यूचर व्हाट विल यू डू राइट रीजन ऑफ टेकिंग दिस allocation ये हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था सेम लेंथ सेम लेंथ सेम लेंथ सेम लेंथ सो ये तीनों मिला के it will be all in the same action plan of first serving so then second serving को आएंगे so where is the second serving allotted from the next plotting the plotting range is this okay Faizo 100% सस्टेन होता है सस्टेन होने के बाद कंटिन्यूटी में कैंडल विद विक क्रिएशन पे आती है तब डबल कर लेना 150% तक की टारगेट के कूल हंट करा के ही मानोगे क्या सर तेरे को बोथ ये मचा है ना फिर जहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है वहां पे तो लॉग कर लो रुक जा सेटअप तो क्रिएट होने वॉल्यूम साथ देने दे डेवलपमेंट में तो आने दे नीचे क्लियर कट एलजी है इंटैक्ट है सब छोड़ के लॉन्ग के लिए अगर तेरे डायरेक्शन में भी आएगा ना तो समझ ले लक के बेसिस पे वो टारगेट हिट करेगा एनालिसिस के बेसिस पे नहीं कीपिंग इन माइंड 1 आवर 100% इज एट 4176 जो तेरा टारगेट लाइन है
So that could be the only one thing which could support you. Nothing else. Guys, any doubts? Please do ask. जैद जी आपका एनालिसिस कैसे चल रही? कहाँ पे लिया? वो मैम स्मिता मैम यहाँ पे लिया है उस बंदे ने इस वीक में. सर वेयर इज द एलजी पॉइंट? 4140 पे है, 4150 पे. गुड मॉर्निंग समर. JNVZJP भाई साहब. 8886. गुड मॉर्निंग सर. आपका नाम क्या है? नहीं उसका लॉन्ग का चल रहा था तो उसके साथ वो और एक ऐड कर दिया. वो प्रॉब्लम नहीं है, अर्न करने दो उसको. कम ऑन, 2 more points for his hunt. The thing is how to analyze whether it will go for 150 or 200%. Rejection perspectives, Nilesh, right? जब भी एक प्लान ऑफ एक्शन डेवलप होता है, रिजेक्शन कब लेगा मार्केट? अगर सेटअप के साथ मूवमेंट जारी है तो टारगेट्स विल create a retracement at 150%, right? And with that, continuity till 200%, right? So in this pursuance, the market could take a rejection at 150, create a retracement, and then continue it, right? So if the setup isn't formed, if it's at 150, the action plan will drop immediately to create the setup. So that is the major plan of actions that you have to keep in mind and follow. Okay? जब तक A formation develop नहीं होगा तब तक trade off action plan नहीं. अगर सेटअप के साथ जा रहा है, 100% ब्रेक हुआ है, 150 से रिट्रेसमेंट आ रहा है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो डिमांड है उतना ही मेजरमेंट का डिमांड क्रिएट होकर कंटिन्यूटी में 200% तक जाएगा. अगर सेटअप क्रिएट किए बिना डायरेक्टली 100% ब्रेक कर रहा है, 150 जाके 150 से मार्केट नीचे आएगा, क्रिएट सेटअप क्रिएट करेगा, उसके बाद कंटिन्यूटी. सर इट्स ओनली पार्शियल क्वेश्चन, रिमेनिंग यू मिस्ड आई गेस. ओके, 1 second. Let me read. I am old subscriber. BS account new है. Maybe you remember. Veer. Yes, I remember. आपका भी कुछ मोटिवेशनल नाम था ना? एंड ग्रीन कलर का फोटो था आपका. I remember. At times the price brief goes above 100% and gives rejection candle and reverse. At times the price briefly goes above 100% and gives rejection candle but continues in the same direction. Yeah, that's what. Same. अगर market 100% से rejection ले रहा है, there are only two things that it happens when, if it's following the setup, if it's in the direction, if it's with the volume, continuity in the movement till 150 to 100, right? So if there is no volume, right, and there is no setup formation, definitely rejection continuity में जाएगा, 100% के ऊपर closure देगा. Closure देगा तभी ही next plan of action sustain होना चाहिए ना. अगर सस्टेन नहीं हुआ है, विक क्रिएट करके फिर से 100% के अंदर आ गया है, तो डेफिनेटली वो रिजेक्शन लेके नीचे के लिए कंटिन्यूटी में आएगी.
सेम सिनेरियो 200% के ऊपर जाके सस्टेन होने जैसे क्रिएट किया, बट हुआ नहीं हुआ. So these are the few simple rules that you have to follow. Okay, Nitesh? Beautiful, guys. चलो, इतने दिन स्ट्रीम बंद होने के बाद मूवमेंट आता था, अभी स्ट्रीम में ही आ गया. रिट्रेसमेंट का. और हंस ले तो. कोई बात नहीं सर, 500 पिप्स में से 30 पिप्स गया. अच्छा है, माइंडसेट खराब मत कर. एंड ये तेरा 30 पिप्स के चक्कर में ना, तू एंड ऑफ द डे क्लोज करता है 350 400 पिप्स. टारगेट हिट हो गया कि क्या बात कर रहे हो. सर वो शायरी सुना दो. कौन सा वाला? रख हौसला. रख हौसला. क्या था वो शायरी? भूल गया, एक सेकंड रुको. हाँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा. प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. थक कर ना बैठे मंजिल भी मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा.
वाह। Streaming will be there for next 15 minutes. जो भी doubts है, please do ask. अब इस बंदे को फोमो आएगा, मजा तो अब है। स्मिता, देखते रहना अब इसका खैरियत कैसी लेगी मार्केट। शानदार बारी खेलेगी इसके साथ अभी। कल एक ही तो ट्रेड हुआ था मॉर्निंग सेशन में, 400 पिप्स का शॉर्ट। गुड मॉर्निंग श्रेयस। उसके बाद लॉन्ग किए थे न्यूयॉर्क सेशन में। सो बैड ऑफ मी, ऐसे लेकर विक क्रिएट किया। कोई बात नहीं। Sir, how true is it that the US is trying to reset the national debt using Bitcoin? How that actually works? ये प्राइस में जो ड्रॉप आ रहा है, क्यों आ रहा है? Why is BlackRock investing so much into Bitcoin? Why Bitcoin ETF has been created? Right? It's all not coincidences. It's all pre-planned measures which has been taken. They will make it they will make it a national treasury in few years, very soon, right? So Bitcoin will be one of the major currencies which will be allotted in pursuance of tradings, not trading in the sense this trading, business tradings. Bitcoin will play a very big part in coming future. सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
Born in Bangalore, brought up in Mumbai, settled in Dubai, studied in Swiss. So how that will impact rest of the world? So just think, Nilesh, if a trillion, sorry, exact numbers yaad nahi aa raha, but somewhere around $36 trillion is in the debt, correct? So if that debt is converted into irrationalized formation of a chain, which is at the current stage, irrationalized chain is Bitcoin, right? So the developmental pursuance will come on economies of the world, right? Where all the other countries is not accepting as BTC as a token of money, right? Only few countries is pressurized on to allocate, right? So in that pursuance only now they have come up in G20 summit of creating a new currency, right? Which will dominate US markets. So अगर वो नोट क्रिएट होने से पहले, ट्रांजैक्शंस क्रिएट होने से पहले अगर डॉलर कन्वर्ट होती है, डेप्थ फ्री करने के लिए बीटीसी में आती है, तो यू विल बी सीइंग ए वेरी ब्यूटीफुल इकोनॉमिक क्राइसिस. So what are some books you have liked that I can pick up in terms of trading? मैं trading के लिए books नहीं पढ़ता हूँ. Psychology or life in general. हाँ, psychology and life I can recommend you a line of 37 books. Starting with first book that I can recommend you is The Wealth Money Can't Buy by Robin Sharma. Then Money Mist and Mantras by Devina Mehra. Toby Robbins मनी मास्टर द गेम, राइट. उसके बाद साइफन में दो है, राइट. 21 लेसन्स बाय युवल नो हरी, राइट. उसके बाद नेक्सस बाय युवल नो हरी, राइट. एंड coming to the next part, The Hard Things About Hard Times and Hard Things by Ben Horzit, right. Open When करके एक बुक है by डॉक्टर जूल स्मिथ, वो पढ़ना, right. Then comes the 80-20 rule by Richard Koch, वो पढ़ सकते हो. Leaders Eat Last पढ़ सकते हो by Simon Sinek. What Are You Doing with Your Life by Krishnamurti, J Krishnamurti, वो पढ़ सकते हो, right. Tiny Experiments by Anna Lord पढ़ सकते हो, right. The Code of the Extraordinary Mind by Vishik Lakhani पढ़ सकते हो. Then Revenge of What is Not Useful by Gladwell पढ़ सकते हो, right. My Life in Full by Indra Nooyi पढ़ सकते हो. Autobiography of Yogi पढ़ सकते हो. In terms of life and psychology के लिए बोल रहा हूँ, दूसरा इसमें मत लेना है. उसके बाद 7 Habits of Highly Effective Peoples करके एक बुक है, ऑथर का नाम भूल गया. स्टीफन कॉनवॉय, वो पढ़ सकते हो. द पावर ऑफ हैबिट्स पढ़ सकते हो बाय चार्ल्स डुगस. गुड वाइफ गुड लाइफ बाय वेक्स किंग पढ़ सकते हो, राइट. हिडन पोटेंशियल बाय एडम ग्रांट पढ़ सकते हो. द आइकियाइक जर्नी बाय टर्टल्स पढ़ सकते हो, ग्रेस लिखा है वो बुक. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन माय लाइफ के बारे में एक बुक है, नाम क्या था, वो बुक का नाम कुछ तो था यार. व्हेन यू आर रेडी, दिस इज हाउ यू हील by Brana West. This will be the best book for you.
Okay. These are the few lineups that you can read out of 13,000 best books. Your book is best. My book is about the concept here, not about psychology or not about life. Yeah, the Unbreakable के बारे में बात कर रहे हो तो I can recommend it. अगर टॉप 10 बुक्स है उसमें से mine will be in the 7th place. अगर concepts के हिसाब से if you want to rate my book, it could play number one role because no one has shared it yet. और एक बुक था, कौन सा था? Think Like a Monk by Jay Shetty. That is also good. 2026 की रीडिंग लिस्ट बन गई. Thank you. No worries, sir. You're welcome. सर आपकी स्टोरी लाइन बताओ. My storyline doesn't start with I was poor and all. Okay. So yes. So I think it might not fantasize you much. सर ट्रेडिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, बिजनेस संभालते हो, बुक्स भी पढ़ते हैं इतनी सारी, तो फिर लाइफ को एंजॉय कब करते हो? कर लेते थे जी कभी कभी. ब्यूटीफुल गाइस. आज कौन क्यों कोई नहीं बोल रहा है? तुक्का है कर, बोलो ना कोई. मजा आ जाएगा सुनने में. सर यू आर ग्रेट. इट ब्लोज द माइंड. किस चीज पे? थैंक यू सो मच. इफ यू थिंक.
ZG, wrong question. I've seen the party Sartros. Sir, I noticed that are you real man and अब लास्ट स्टॉप आप है सर. मतलब समझा नहीं. तो इतना दिन ये बात कर रहा था क्या आपके साथ श्रेयस? Sir, I noticed that are you real man and अब लास्ट स्टॉप आप है. ओके, इतने दिन शक में थे. I didn't know this. सर कभी कभी कर लेते हैं. जय जी. सर लाइफ फेज दिखाओ एक बार प्लीज. जरूर. मराठी स्पीक करते हैं सर. येते आम्हाला मराठी. Streaming will be there for next 5 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. नीतीश कितनी लैंग्वेज आती है तुम्हारा? 18 लैंग्वेज. Faiza, TP1 hit. Next target allocation will be in pursuance of a retracement. If there is no retracement, stabilize allocation लेके चलना, followed through with 1 hour allocating point. लो जी, LG पॉइंट पे आ गया. बहुत जल्द. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गई. Next allocation will be played in pursuance of 200% break, no retracement. Surplus allocation नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? 1 hour का जो लास्ट डिमांड allocation है उसे प्ले करना है. Right? So last demand allocation will be played in perspective of this. So this will be the new placement allotted in the allocation.
It should match with the intact. Yes, it's matching with the intact. Okay. Only on the break of 200%, not prior to that. So to all the beginners, it doesn't matter what strategy, what levels, what formulation you follow. Just one thing you have to make sure: 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, come with a small capital, practice it, compound it. While compounding, build it by following a proper risk to reward. With following a proper risk to reward, just make sure one thing: to remove FGF, which is FOMO, greed, and fear. Once that has been removed, build the capital step by step, because it's your hard earned money. Don't give that money to manhandling or following the tips. Learn and then earn. It's very easy. Few months of hard work could give you the best returns in this business. So protect your capital because it's your hard earned money. Learn, develop, analyze, execute by yourself. Because only one thing that could sustain in this market is your psychology, your execution, and your performance and your record. So follow that and be in a right direction. Don't get into the wrong directions always. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली stream पे. तब तक के लिए take care. Bye bye.